What are aims and objectives? Aims are general society's expectations, Okay, they are the general and intentions. these are long-term expectations. Very true. Yes, they are very long-term expectations, and they are very generic in nature. They are very broad in nature, and that could be like, there could be number of different aims to an education, like, to for a curriculum basically. And this could basically, you are right in saying that, okay, yes, they are the society's general expectations from the curriculum. Anybody else wants to add in something here? Ma'am, aims are the long-term, it's basically the long-term, whereas the objectives are how to achieve the aims. Mm-hmm. Okay, objectives are basically not how. We'll just see what objectives are, but can you once again repeat what did you say what aims are? Like aim is a long-term. If in the school, the aim is to, make the human being good human beings, children, Okay. right? But in the objective, how to make it. Yes. Okay. So aims are basically the broad intentions, as you said, कि हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों का अच्छा citizen बनाएं. ठीक है. So this is our aim. This is not something that could be achieved in like 10 years, 20 years. We don't know how long will it take. But yes, if we talk about, informing students about rules of traffic rules, maybe, yeah, what is the use of the traffic lights, so then this could be an objective, because it's something very short term and it is something which is very specific. Yes, so they are long term, and they are the expectations that could be achieved in long run basically. Yes. और उस दिन मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, अगर आप लोगों को याद है. I told you that, अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं और हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम है that we want our students to be good observers. So this cannot be achieved in 1 year, 2 year, 3 year. This will take a long time. So what we'll do is that, we will make our goal out of it. That could be very specific, that students would be able to in class 1 they or 2 1 2 3, maybe at the primary level, they'll be observing their nature and they will learn observation skills. फिर तो उसके लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी, दैट एक दिन आप उनको गार्डन में ले जाएंगे, वहां जो एक्टिविटी करवाएंगे, तो उसके लिए फिर आप गोल सेट करेंगे. रिमेम्बर दैट? Yes, ma'am. So are we clear on this idea that, uh, that aims are something very broad? They are not something that could be achieved in a day or two. जैसे हम अपनी जिंदगी का भी एक एम बनाते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है. सो एक बच्चा होता है जो क्लास 1 2 3 में ही ये सोचना शुरू कर देता है, बट देन इट कीप्स ऑन चेंजिंग. दैट्स ओके, एम्स कैन चेंज. दैट्स नॉट लाइक ये कोई होली चीज है. लेकिन yes, they are something that takes, like, a longer period of time. ठीक है. So what we'll do is, like, I want you all to share at least one aim for the subject that you are teaching, so that then फिर हम जब move on करें तो हम उसी में से एक goal देखें, and then, like, फिर उसी में से हम एक objective देखें या number of objectives देखें. So you can, like, directly see your textbook and drive one, कि भाई आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये एम है. और either you can, like, simply, refer to the curriculum and tell me what is the aim of teaching your subject. So I'll take responses one by one. So I'm giving you few minutes to think or, collect the information quickly. और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे. Is the task clear to everyone? Assalamu alaikum, miss. Please, can you repeat the task? The task is that कि हम अपने टेक्स्ट बुक में से या हम अपना करिकुलम, कुछ भी एक चीज आप उठा लें. करिकुलम है तो नो प्रॉब्लम, अगर आपके पास नहीं है, just look at the textbook and think or see what is the aim of teaching your particular subject. ठीक है. What is the long term aim of teaching the subject that you're teaching? जैसे मैंने साइंस की एग्जाम्पल दी थी, या मैंने सोशल स्टडीज में से कुछ एग्जाम्पल्स दी थी उस दिन, सिटीजनशिप वगैरह, एंड दे आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस राइट नाउ. सो आप उसमें से देखें कि आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक लॉन्ग टर्म एम क्या है, एंड देन वील जस्ट, लाइक, शेयर, एंड देन उसी के ऊपर फिर आगे लेके चलेंगे उसको.
Is that clear to Okay. everyone? Yes, miss. Ooh. Hussaina? Hussaina? Yes, ma'am. Sorry. Just calling the little baby at home. So, all right. Are we ready now? Everybody has got one? Or we need some more time? Miss, please, 3 minutes only. चले 9:15 हुए 9:20 पे I'll like Ma'am, bring you question. guys back. जी बोले. मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करनी क्वेश्चन ये कह रही हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं साइंस इंग्लिश एसएसटी मैथ्स जो भी उसका एक एम आपको ढूंढना है कि क्या इसका लॉन्ग टर्म एम है. ठीक है. You can look at your textbook and drive one or you can look at the SNC या जो भी करिकुलम आप यूज करते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम मैं श्री बात कर रही हूँ. जी श्रेणी. तो मैं जैसे मैम टीचिंग नहीं करती, मैं स्कूल्स मॉनिटर करती हूँ सिंध ठीक है. गवर्नमेंट के. तो फिर इस मैं किस तरह करूँगी ये? No problem, मतलब Shri. मेरा You कोई can subject pick up नहीं है. any one subject of your interest. आप साइंस एसएसटी कोई भी एक सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट तो होगा ना. जी बिल्कुल. तो आप उसमें से एक एम उठा लें या स्कूल मॉनिटरिंग के क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एम्स क्या हैं आप इस तरह भी देख सकती हैं उसको. ठीक है मैम. ठीक है. So I'll just get back and ping you guys at 9:20. 5 मिनट है, आप लोग देख लें और इसको. ठीक है. Ma'am, I have written in the comments. Yeah, I've seen the comments. I'm seeing the chat box. Just hold on, let everybody come up with some and then we can start discussing a few. ठीक है.
All right. So are we all able to find at least one? Now see, when you say Yes, ma'am. Yes, all right, so did we look at the curriculum, or have we just like identified on our own? Is there anybody who has identified? Ma'am, I have identified on my own as I personally develop curriculum for English language. जी, तो आप मुझे आपका कहाँ आपने चैट में डाला है? नहीं मैम, मैं टाइप कर देती हूँ मैम, जी जी, आप मुझे वर्बली बता दें, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैम, for primary level 1 to 5, the main aim should be to read, understand and comprehend English literature and to know the background of literature text. ठीक है, so this is broad, like but when you say that they would be able to read literature, Yes, this is the broader aspect. okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है। And is there any specific thing that you are looking at when it comes down to literature? Is there any specific text types? For if I speak about primary level, I don't go very specific because the main motive is for them to read Alright. whatever ठीक है। is easy and understandable for them. ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं, अभी किसी ने इस्लामियत का पोस्ट किया होता है, आई रियली लाइक दैट। जी, ये इस्लामियत का किसने पोस्ट किया है? द एम ऑफ टीचिंग इस्लामियत इज टू मेक स्टूडेंट्स learn the basic right and knowledge of Islam that will help them not only in this world but the life hereafter. Now this is particularly an aim. This cannot be achieved in like years and years. हमें कुछ नहीं पता कि ये कितने साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, but we exactly know what we want our students to learn. We want them to learn that what is the basic and the right knowledge of Islam. Now see, again, the word right is very controversial here. What is right for me may not be like, there are few certain rights which may not be right for everybody. So it could be like, again, when you actually start teaching this, you would be specifying it ke bhai pillars ke bare mein ya phir hadith ke bare mein ya Quran ke bare mein, because obviously in school we would avoid something that could raise any controversial like things. So yes, that's how the curriculum is designed. आप देखेंगे पूरा कुरानिक बेसिस पे हमने कहा था कि ऐसे इस्लामियत करिकुलम को पूरा डिजाइन किया गया। तो रीजन यही है कि दैट वी वांट द स्टूडेंट्स टू लर्न द बेसिक नॉलेज ऑफ इस्लाम एंड व्हिच विल हेल्प देम नॉट इन द वर्ल्ड हियर but it may also help them in the life after. So this is a broad aim, isn't it? This is a good example of a broad aim. इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें, किसी ने इंग्लिश के लिए डाला है कि इंग्लिश learners learn second language. Now this is not an aim. This is basically your kind of a statement where you want but if you say that okay, when you say to help learners learn English as a second language, but still English is not their second language in all the cases in Pakistan. So that could be one of the broader thing कि आप उसको second language बनाएं उनकी पहले तो। So ठीक है, English effectively, to use English effectively for the for study purpose across the curriculum. This is a good aim, and this is a very like this is the aim which is basically हम English को हम क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूल में इतना, वरना हम सिर्फ बोलना सिखा दें तो हम क्यों सारी स्किल्स पे काम करें? बिकॉज कि हम चाहते हैं कि वो स्टडी पर्पस के लिए इंग्लिश को प्रॉपरली यूज कर सके। ठीक है, इसके अलावा so there are a number of these which I can see that they are all aims, and you people have identified the aim of teaching mathematics is that the students will be able to relate it in the sorry I missed out, ये कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक, students will be able to
Mathematics is to able to relate and use it in their daily life application by like finding discounts, profit. अब देखिए जब आप कह रहे हैं like finding discounts, so this is again you are making it specific. It's just like they will be able to relate and use mathematics in their daily life. You know, that is the aim. ठीक है? जी. The basic idea of teaching SST is to analyze history and its influence on the present. Very good. To recognize elements of physical world and how it impacts on us, and to contribute towards creating a better society as well. So these are all aims. School monitoring and evaluation aims to providing consolidate source of information about SIP and missing facilities in schools. Perfect है, ठीक है शिरीन, ये भी क्योंकि ये आपका monitoring and evaluation का aim है, ठीक है? And this is a long term aim again कि भाई आप क्यों स्कूल को monitor कर रहे हैं या evaluate कर रहे हैं, so that आपके पास एक consolidated source of information हो. And this is more a goal, I would say, like, you know, कि आप, you know, you're also looking at missing facilities in school, so this becomes a goal. Then aim is like, you know, to see to identify the needs basically in schools. Do you understand? Yes, ma'am. To evaluate, to identify, or to monitor schools and to identify the gaps and needs. That's a more broader aim. Okay, Nazia has given to develop skills of listening, speaking, reading, and writing in a variety of contexts. Now, this is more specific. This is not aim. This could be a goal. Nazia, have you like, you know, created on your own, or you have picked it from the curriculum? Ma'am, we have a curriculum. Okay, but this is more a goal sort of thing, because देखिए जब हम language की बात करते हैं ना, जब हम skills की बात करते हैं, skills are more specific, but like learning of English as a second language or use of English in their daily life is more a, you know, just एक उस दिन मैंने आपको example दी थी कि students will be able to learn the language, फिर उसके बाद they will be able to identify slangs. So they basically it's more an object, Yes, ma'am. yeah, more an goal sort of a thing, because आप बहुत specified है कि आप हमें ये 4 skills पे काम करना है, ठीक है? Chemistry and awareness of social. जी जी. Hello. Am I audible to everybody? Yes, ma'am. All right, thank you. Okay, chemistry is an awareness of social, economic, environment, and technological application of chemistry. ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखें, again, this is a very broad thing. This is an aim in particular, क्योंकि आप बहुत सारे aspects में उसकी application देख रहे हैं, which is not possible that the student might be able to learn, like, you know, maybe हमारा अगर curriculum हम देखें तो मेरे ख्याल से very few aspect of it has been हम सिर्फ technological या content वाला aspect ही कर रहे होते हैं, हम कहाँ social और economic aspects या environmental aspect को chemistry से जोड़ते हैं. Do we do that? Yes, ma'am. Okay, can you give me an example? मैम हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट से और नई चीज़ें इजाद करने के हवाले से हम सोशल इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और जब सोशल होगा तो फिर ये हमारे इकोनॉमिक भी होगा. करिकुलम का हिस्सा है इस वक्त, मेरा सवाल ये है. अभी नहीं है मैम. नहीं है, तो ये सिर्फ एक एम ही है, अभी हमारा एक टारगेट ये जो हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमने कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ही डेवलप नहीं किए, राइट? टू इनेबल स्टूडेंट्स एक्वायर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज फॉर मेंटेनिंग बुक्स of accounts of trading business run by sole traders. Now this is Iram, this is a basically ये बहुत specific objective की तरह है. If you say that to acquire skills and expertise in maintaining books of accounts, ये specific हो गया ना? Of a trading business run by sole traders, which is a common concern in Pakistan economy. Basically, students will be able to analyze the common concerns in Pakistan's economy. This is the aim.
ये तो अभी आप बहुत स्पेसिफिक जा रहे हैं। Am I clear, Iram? Yes, ma'am. All Yes, right. ma'am. Mariam, the aim of English is to develop reading, writing skills for. Okay, this could be. This is more like. I would say ये आप लोग लैंग्वेजेस के गोल को और थोड़ा ब्रॉड करें, थोड़ा और ब्रॉडली सोचे, बिकॉज ये जब आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हो जाते हैं, वो गोल्स बन जाते हैं, ठीक है. The aim of teaching English is to help student acquire practical command of English language. Okay, this is good. Students should be able to understand spoken English, speak English and read English and write English. Can we just make it like, to understand English language in variety of context? So ये aim होगा. Again, जब आप skills की speak, write, understand spoken language, ये सारे specific goals में आ जाते हैं. The objective is to enable students to somicate. Am I pronouncing it properly? Sorry, Mrs. Communicate. हाँ, सॉरी, मैंने यही सोचा कि ये कौन सा नया वर्ड है जो आज तक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं. बट इट्स लिंगुआ फ्रेंका, तो पॉसिबिलिटी सारी है, ठीक है. तो इजीली विद द पीपल, हाँ, दिस इज परफेक्टली एन ऑब्जेक्टिव कि भाई कम्युनिकेट विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड. जब वो अराउंड द वर्ल्ड जाएंगे तब अल्लाह मालिक है, वाला हिसाब है, ठीक है. So, like, I'm not reading out all of them, but I think we are very clear on what aims are now. ठीक है? कोई specifically Ma'am, I want to ask one thing. जी. Ma'am, social में like social interaction is like integration of all the themes with the social, as you said ना कि social studies का example. So can we take an example of like plants? जैसे हम बच्चों को, like, I mean early years. So we teach them what are the needs of plant, what are the parts of plant. But in PSHE we tell them how to take care of the plants. So can we integrate with this socially? Yeah, you can. Basically, देखें how to take care of the plants or why plants are important to us. Yes, ma'am. But this is again not. This is very specific, ठीक है. आप इसको अगर broader way में देखें तो आप बच्चों को ये पढ़ाएंगे what is the importance of plantation for the environment, or human environment. Yes, Realize agree, and ma'am. appreciate the importance of having environment, having more plants in the environment is more an objective. ये अभी specific की आप बात कर रहे हैं, ठीक है? Yes, ma'am. चलें आगे चलें आप. अब देखिए, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, कल्चर एंड ऑफ पाकिस्तान यहाँ किसी ने लिखा है to inculcate patriotism, तो ठीक है, लेकिन the aim of teaching Pakistan studies can be enhancing. It was never be can be, it will be always is, ठीक है. यहाँ पे हम इस तरह यूज करते हैं, enhancing students knowledge about history, culture and geography of Pakistan. I think ये एक very set ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसकी जो बेसिक्स है उसकी हम नॉलेज इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं. तो आई वुड नॉट कंसिडर इट हियर. रादर अगर हम ये कहें कि द एम ऑफ टीचिंग पाकिस्तान स्टडीज इज टू enable students to value our history would be more and aim of its kind. और जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम बच्चों में we want to develop spatial thinking. अब स्पेशल थिंकिंग क्या है कि स्पेस के बारे में उनकी पूरी आइडिया हो कि कितनी स्पेस में कितने लोग रह सकते हैं, या कितनी स्पेस में अगर इतने लोग आ जाएंगे तो ये ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा. ये सब स्पेशल थिंकिंग में आती है ना. तो ये एक ब्रॉडर थिंकिंग है, ठीक है. फिर इसी तरह कल्चर के बारे में हम बात करें तो हाउ कल्चर शेप्स अस मे बी, सो दे वुड बी एबल टू अप्रिशिएट देयर ओन कल्चर, वैल्यू देयर ओन कल्चर. ये सारे एम्स हो जाते हैं, ठीक है. Are we okay with this? Yes, ma'am. अब आगे Yes, चलें ma'am. गोल्स की तरफ. Yes, yes, ma'am. अब इसी तरह से अब हमने उस दिन बात की थी कि गोल्स थोड़े से जो है ना ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं देन एम्स, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एम्स आर समथिंग व्हिच इज वेरी लाइक ब्रॉड एंड
समथिंग दैट कैन नॉट बी अचीव्ड इन अ ईयर और टू, बट अब हम ये कहें कि भाई ये तो अब अचीव ही नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. सो व्हाट वी डू इज वी ड्राइव गोल्स आउट ऑफ इट टू मेक इट अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, और ताकि हम 2-3 साल में, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसीज होती है ना, 5 फिस्कल ईयर्स में हम ये अचीव कर लेंगे, 3 फिस्कल ईयर्स में हम ये अचीव कर लेते हैं. ये इंटरनेट पे आप न्यूज में अक्सर सुन रहे होंगे. सुनते हैं? न्यूज ही नहीं सुनते अब तो हम, कि बुरी खबरें आई ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे हम करते हैं ना कि भाई हम स्पेसिफिकली, अगर पाकिस्तान का एक एम है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा एम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए ऑलमोस्ट. तो हम इसको क्या करते हैं, वी काइंड ऑफ ब्रेक इट डाउन कि भाई 5 फिस्कल ईयर्स में हम ये कर लेंगे, ये इस शोबे में हम काम करेंगे, अगले 5 फिस्कल ईयर्स में हम ये काम करेंगे, अगले 5 में ये करेंगे. इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम थोड़े से एम्स को जो है वो स्पेसिफिक बनाकर और इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडिया हो कि हम अपनी अगले कुछ सालों में क्या अचीव करने वाले. इसी तरह हम स्कूल में क्या करते हैं कि हम 1 to 3 के कुछ गोल्स बनाते हैं, फिर हम 4-5 के लिए कुछ गोल्स बनाते हैं, फिर इस तरह से हम या फिर क्लास 1 के लिए हम ये गोल बना लेते हैं कि भाई अगर हमें बच्चों को प्रोसेस स्किल सिखाने हैं जो कि 6 है, तो क्लास 1 से 5 तक बच्चा ये 2 ही सीखेगा. फिर हम आगे चलेंगे, जब हम 4-5 में जाएंगे तो उन 2 के साथ एक और ऐड हो जाएंगी. आई थिंक प्रोसेस स्किल्स वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मुझे बहुत पसंद आ गई है. दो साइंस इज नॉट माय सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ठीक है, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं. इसी तरह मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स से बहुत सारे किस्म के ऑपरेशंस हैं. हम कहते हैं कि बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख जाएंगे और उसकी एप्लीकेशन करने लगेंगे अपनी डेली लाइफ में. तो पहले 3 सालों में हम सिर्फ ये देखेंगे कि बच्चा प्लस माइनस को एप्लीकेशन कर रहा है, या मे बी बेसिक ऑपरेशंस जो हैं, जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. फिर आप आगे 4-5 में जाते हैं तो आप थोड़ा सा अर्थमेटिक ऐड करते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस की बात करते हैं. फिर आप जब ओके, सो ये वील एंड इन 10 मिनट्स, तो फिर हम वापस ज्वाइन करेंगे विद द सेम लिंक. ठीक है, ओके, सो व्हाट वील डू इज के अच्छा, तो हम क्या कहते हैं कि हम अगले 5 सालों में ये अचीव करेंगे, फिर उससे अगले 5 सालों में ये अचीव करेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक बट स्टिल अ broad thing to do. It cannot be achieved in 1 or 2 years, or it cannot, at least it can be achieved in, like, not possible to achieve in a month or in one class. ठीक है. It can be something that is a little more complex in a sense ke a little more long term but specific, not like aims ke usko achieve karne mein 10 saal lag jaye, not like that. ठीक है. So are we clear on this idea? Yes, ma'am. The examples. Yes, ma'am. Okay, so अब हम क्या करेंगे कि हम अपने ही एम्स को देखते हुए कुछ गोल्स ड्राइव कर लेते हैं, so that we know कि अच्छा अब ये इसका गोल है. जैसे देखिए, आप अगेन वो एग्जाम्पल याद करिएगा जब मैंने कहा था कि आवर गोल इज टू मेक स्टूडेंट्स डेमोक्रेटिक सिटीजन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हमने उनको क्या सिखाया कि वी हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेसी फंक्शंस. ठीक है ना. तो इस तरह से आप अपना एम देखें और देखें कि उसमें से आप कौन सा गोल ड्राइव कर सकते हैं. So what we'll do is, like, I'll give you 5 minutes. जो भी समझ में आता है, नहीं भी समझ में आ रहा है, it's okay. जो आपको लगता है कि ये गोल हो सकते हैं इसके शॉर्ट टर्म, drive that 1 or 2, and then again we'll put them in the chat box, और फिर we'll come back and discuss. ठीक है. तो कितना टाइम चाहिए होगा आप लोगों को? 5 मिनट या 10 मिनट? मैम 5 to Okay, I'll give you 10 minutes. अभी 9:38 हुए हैं. So what we'll do is, अभी हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी, तो हम मैं am not ending the meeting. जैसे ये एंड हो तो वापस rejoin कर लीजिएगा. ठीक है. But I'm giving you 10 minutes. 9:48 के बाद we'll start the discussion. And I would suggest कि आप अपने SNC में देख लें, अगर आपके पास SNC का डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड है, that will really help you drive. ठीक है. और मे भी शायद इसके बाद आप लोग अपने कुछ एम्स को भी रिफ्रेश करना चाहें.
All right. So I think good 10 minutes are enough to at least drive one goal, and you can have more. ठीक है? Is the task clear to everyone? मैम रिपीट कर देंगे कि Ma'am, can you मैं repeat, रिपीट कर please? देती हूँ. हमें क्या करना है कि हमें अपना करिकुलम देखें आप, या आप अपनी किताब देखें वापस, और अपना एम देखें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये मेरे सब्जेक्ट का एम है, और फिर उसके बाद उसको देखिए कि अब इसका गोल क्या होगा, क्योंकि आपने कहा कि एम इज समथिंग वेरी ब्रॉड, यू कैन नॉट अचीव इट इन 1 year 2 year. तो एटलीस्ट अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उन 3 सालों में आप उस एम में से कौन सी 2 चीजें अचीव करेंगे. ठीक है? या अगर आप कह रहे हैं कि ये मेरा एक ब्रॉडर एम है, तो क्लास 8 में इसमें से बच्चे ये अचीव कर लेंगे, तो वो स्पेसिफिक गोल्स हो जाएंगे हमारे. ठीक है ना? एम आई करेक्ट? Okay, ma'am. Yes. ठीक है, तो एम आई क्लियर नाउ? Yes, ma'am. जी कोई साहब भी पूछ रहे थे, तो मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ कि इज ही क्लियर ऑन द टास्क? यस मैम क्लियर हो मैम. ऑलराइट, चलिए थैंक ठीक यू. है. अच्छा, सॉरी, जस्ट लेट यू नो कि आप लोग अभी चैट में अपने एम्स गोल्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब हम वापस आई थिंक मीटिंग रीस्टार्ट करेंगे, तो आई डोंट नो वो चैट रहेगी या वो नहीं स्टार्ट हो जाएगी. सो फिर आप लोगों को वापस लिखने पड़ेंगे. ओके मैम, ठीक है.
All right, so we have less than 1 minute. So what we'll do is we'll end this meeting and we'll come back and okay. Please put your goals in the chat box because कि मुझे अब पुरानी chat नजर नहीं आ रही यहाँ पे. All right. Okay, so let's look at the first one that Shireen has already posted. Monitoring checklists can help teachers in both primary and secondary school to ensure that their school curriculum address the broad learning needs of students and give quick outcomes. Tracking sheets also maintain a balance between key areas of learning and TNA. I'm not sure about the second one, Shireen, what you are trying to say here. मैम सेकंड वन में आई एम ट्राइंग टू से जैसे कि हम टीचर जो ट्रेनिंग टीचर नीड असेसमेंट जो होते हैं हम मॉनिटरिंग में उसको भी देखते हैं कि टीचर की नीड क्या है अकॉर्डिंग टू के वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है और वो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर रही हैं. तो टीचर नीड असेसमेंट हम हर मंथली बेसिस पे चेक करते हैं कि जो टीचर्स पढ़ा रही हैं उनका जो आउटकम है यानी फौरी आउटकम जो रिजल्ट है इनफैक्ट वो है भी या नहीं. तो उस चीज को मैं कर रही थी. देखिए आपने पहले हमने देखा था कि आपका एम ये था कि टू मॉनिटर गवर्नमेंट स्कूल्स टू आइडेंटिफाई नीड्स एंड गैप्स. ठीक है ना. So now your goal is that you would evaluate the performance of the teacher to identify their needs in the sense that whether they need teacher training, whether they need some equipments, whether they need something, some model support या कुछ भी इस तरह से. So this is your goal now. ठीक है, तो ये specific हो गया. So I think rewording is required. ठीक है, your idea is clear. Am I clear to you, Shri? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The first one is also like, आप इसमें कह सकते हैं कि monitoring can help to help teachers in both primary and secondary school to ensure that they implement their curriculum to achieve the curriculum objectives basically. So what is that कि आप उनको ये कर रहे हैं कि आप उनको analyze, आप उनको monitor कर रहे हैं to see that whether they are following their school curriculum properly and then they are achieving the curriculum objectives. तो आप क्या कर रहे हैं? Again you are doing a specific thing. फिर आप एक subject areas में जब जाएंगी तो it will become more specific और वो objective oriented हो जाएगा. ठीक है, या हर visit का आपका अपना एक objective होगा. Am I clear? जी मैम, बिल्कुल हर विजिट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होगा. लेकिन ये आपके गोल्स हैं, आपके ब्रॉडर गोल्स हैं. ठीक है ना, कि आप उनको किन किन चीजों के लिए मॉनिटर कर रहे हैं. ठीक है, कौन से नीड्स और गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनको विजिट करेंगे और उनको ओवरऑल उनका मॉनिटरिंग करेंगे. ठीक है ना, तो ये आपकी गोल्स हो गए. जी मैम. ठीक है हीरा. डेवलप स्किल्स सच एज हैंडलिंग डेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड्स. Basically yes, this is kind of object goal because कि आपने ये कहाँ से ड्राइव किया है हीरा? ये आपने साइंस प्रोसेस स्किल्स वाले एम से ड्राइव किए हैं? No ma'am, it was there in the curriculum from my O-level syllabus. तो आपने वहाँ एम देखा कि क्या है एम, करिकुलम एम? जी मिस, एम सेपरेट थे and this was mentioned in an individual separate paragraph. Okay, so can you tell me what was the aim? Under the heading? Yes, miss. The aim which I have mentioned previously is to let me just exactly to understand that the application of scientific knowledge can benefit people and the environment. Very good. तो अब आप बेसिकली अब आपका गोल क्या है कि आप वो स्किल्स डेवलप करना चाहती हैं जिसमें हैंडलिंग डेटा आ गया, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया और अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड्स आ गया. टू बेसिकली दैट वाज योर एम कि वो बच्चे वो सारे साइंस को जो भी वो साइंटिफिक चीजें हैं उनको सीख कर उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेजर मास, इजंट इट? Yes ma'am. तो अब हम इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि उनको ये स्किल्स आएंगी to acquire essential scientific skills required for
progression for both further studies and employment. Yes, तो वो कुछ इस तरह की scientific skills वो हासिल करें जो उनको आगे जब वो जाके साइंस में कुछ पढ़ना चाहे या फिर वो साइंस में कोई अपना करियर डेवलप करना चाहे तो वहां यूज कर सके. ठीक है Yes, ma'am. जी. Anybody else? Okay, chemistry to develop the ability to observe, to analyze and interpret objectively and to make rational decisions and solve problems involving chemistry, right? To develop observational and analytical skills. ठीक है. अब देखिए, it can be goal can be like a short, like 5-4 years वाला, या it can be like still a broader के पूरे एक level को जब वो बच्चा clear करे प्राइमरी या सेकेंडरी को तो वो इतना कर ले. ठीक है ना. अच्छा जी. Zainab acquire basic skills in order to communicate in English language with English language speakers. Okay. But do you think that they would be having you're talking about first language speaker here, yeah, any language speaker, Zainab? First language speaker. So do you think that they will have that that is our ultimate goal, first language speakers के साथ बच्चों का कितना interaction होता है? And then देखिए, again, first language speaker is not our goal, क्योंकि first language speakers की language इतनी difficult होती है, उनके accent इतने problematic होते हैं कि बच्चे शायद अभी आप भी अमेरिका जाएंगे ना, अभी तो आप उनकी लैंग्वेज को समझने में आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि उसके एक्सेंट्स इतने अजीब होते हैं उनके. ठीक है. फिर आप फ्रेंच कंट्री में जाएंगे, भले वो फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स होंगे लेकिन क्योंकि वो फ्रेंच कॉलोनी में रह चुके हैं तो उनका अपना ही एक्सेंट होता है. सो आई वुड सजेस्ट कीप इट लाइक with English with to communicate with people who speaks English, whether they are the first language speaker or second language speaker, that shouldn't matter. ठीक है. Or to communicate in English fluently, simple as that. ठीक है. जी Zainab, am I audible to everybody? Yes, miss. I'm sorry that today I'm using a lot of English in the class, but अगर किसी को ना समझ में आए तो please repeat करने के लिए मुझे बोल दीजिएगा, because वो English में पढ़ने के बाद I kind of switch to the same language for explanation also. So अगर कुछ हो ambiguities तो please let me know. ठीक है. All right. तो goals क्या यहाँ पे इस्लामियत का किसी ने दिया हुआ है as our most useful and perfect model of perfection. Islam is our holy prophet. The goal is to make people live their lives as he did, following Quran, Hadith, and Sunnah. Okay, but still, this is very broad. This is an aim. This is not a goal. जी, किसने बनाया है? ये जो है ना, आप कह रहे हैं ना कि बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मॉडल देखकर अपनी जिंदगी उनकी तरह गुजारे, तो ये एक एम है basically. This is not a goal. Goal would be like they could, the students will be able to, to become a practicing Muslim and maybe offer 5-time prayers. So ये एक थोड़ा specific हो जाएगा. लेकिन when you say कि मतलब it's a huge thing that they see Hazrat Muhammad as their role model, and they practice the lives according to his practices and his teachings. So this is a huge thing. Don't you think it's an aim? जी, कोई कुछ बोले ताकि मुझे समझ में आए कि मैं अकेले नहीं बोल रही. हेलो मिस, आप किसे बोल रही हैं? ये जो इस्लामियत का गोल जिसने बनाया है, इट्स एन ओवरऑल डिस्कशन. मैं किसी एक को नहीं बोल रही, लेकिन आई थिंक सभी चैट बॉक्स में अगर ये एम्स देखें तो आप सबको ये हेल्प मिलेगी. बिकॉज सी, इफ यू लुक एट दिस एम, गोल, दिस इज क्वाइट बिग, दिस इज क्वाइट ह्यूज. लाइक वापस मैं रिपीट करती हूँ. इट सेज दैट आवर मोस्ट यूजफुल एंड परफेक्ट मॉडल of perfection in Islam is our holy prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The goal is to make people live their lives as he did, following Quran, Hadith, and Sunnah.
So do you think it's a aim or it's a goal? It's a aim, I guess, क्योंकि ये तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा. See, it's very broad. Like it's not as it cannot be like it can never be specific because there's lot to learn. अब हर दिन अगर कुछ नया सीखेंगे तो भी बहुत कुछ बाकी रह जाएगा. Do you understand that? Yes, exactly. Okay. Students will be able to collect, organize, display and interpret data and information. Mathematics में ये statistical goal है, ठीक है? या ये किसी भी उसमें अप्लाई हो सकता है. सीमी, उस सीमी खान. Miss statistical है, you're right. ठीक है, ठीक है. Alright, तो जब statistics पढ़ाएंगे तो ये हमारा गोल होगा, ठीक है? To enable students to relate past and its impact on present world. ये तो आपने वही आसमा. This is again your like you have picked up the same as you picked it up as in your goal, isn't it? Yes, miss. To make students understand the geographical features and importance. अच्छा, ये जो geographical features की आप बात कर रही है ना, ये this can be more an objective. क्योंकि हम एक particular lesson में या दो particular majority of students जो है वो हमसे यही पूछना है, मिस एसएसटी का सब्जेक्ट क्यों होता है करिकुलम में या हमारे कोर्स में. तो उनको बेसिकली यही समझाना होता है कि जब तक हम हिस्ट्री को रिलेट नहीं करेंगे अपने प्रेजेंट से या अपने फ्यूचर से, तो आपका एम है ना, वी कैन डेवलप मोर. तो ये आपका एम है, ये आपका एम है. डू यू अंडरस्टैंड? फिर आप गोल में ये होगा कि स्टूडेंट पर्टिकुलरली पाकिस्तान की हिस्ट्री को अपने आप के साथ रिलेट कर सकेंगे या इस्लामिक हिस्ट्री को रिलेट कर सकेंगे या यू नो सिविलाइजेशंस की हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकेंगे. तो ये आपका एम है ना, ये तो बहुत ब्रॉडर है, ठीक है ना? आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, ये सही है. अच्छा, नाउ आई गॉट. ठीक है. A goal in teaching history of Pakistan can Yes, be miss. to make students well informed about the events and consequences for the creation of Pakistan. Okay, consequence तो यही है कि पाकिस्तान बन गया और आज तक हम इसको भुगत रहे. खैर है, चलें, ऐसा नहीं है. खैर, so this is like yes, this is specific that you understand. ये गोल हो गया कि आप अब देखिए टीचिंग ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री भी ये कोई एक साल में नहीं हो सकता. It takes years, like you know, आप एक ही साल में पूरे events और consequences नहीं पढ़ा सकते. So this is a goal, ठीक है? Goal for English is to develop professional abilities, ठीक है? Professional abilities in what sense? Miss, to communicate well in the society. This is again goal. This is again aim. Sorry, this is aim, ठीक है? तो आप इसको अभी स्पेसिफिक ये होगा कि भाई वो पर्टिकुलरली कोई एक या दो स्किल को मास्टर कर लें to like you know to communicate in English, whether they master like you know in reading or they can write narratives या वो sentence structures लिख सके. प्राइमरी में हमारा ज्यादा गोल क्या होता है कि that they start reading and writing a paragraph. फिर सेकेंडरी में जाएंगे तो they would be able to write a narrative, a long narrative, maybe read a novel. इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाने की जरूरत है, अदरवाइज दिस इज फाइन. ठीक है, अब मैं आगे सारे नहीं पढ़ रही, बाकी आप लोग खुद ही देख लें. एक सी थ्रू, आई वुड से दैट एवरीबडी मस्ट गो थ्रू द होल ऑफ द एम्स इन द चैट और फिर अब देख लें कि इसमें कुछ, मैं ये देख लेती हूँ कि किसमें ज्यादा मुझे कमेंट करने की जरूरत है और आप लोग देख लें जिसमें आपको अनक्लैरिटी और आप सवाल पूछना चाहते हैं. जैसे यहाँ आमना ने डाला है, टू डेवलप स्टूडेंट अप्रिशिएट for appreciation for a variety of texts. This is a goal कि वो ये particular goals के लिए चीजों के लिए अपना appreciation develop करेंगे in order to understand human behavior, human attitude towards life and relate them to their own experiences. ये आपका aim है basically, ठीक है? और goal क्या है? To benefit, to become confident in using English in a variety of ways through their practice. अब देखिए आप जो कह रहे हैं ना, देखिए आप एम आपका लिटरेचर का है और आप जो गोल बना रहे हैं वो कुछ और स्किल्स पे बना रहे हैं, which is like more into a language linguistics area. तो आप कोशिश ये करें कि देखिए आप जो भी एम बना रहे हैं उसी से एक गोल ड्राइव करें. ठीक है आमना?
I feel that जो आपका पहला वाला एम जो आपने लिखा है ना, to develop students appreciate a variety of texts, ये भी itself गोल ही है. Yes, I ठीक think है? so too. Okay. Physics develop skills to make practical application in the field of physics. Now, this is again practical applications in the field of physics is an aim. To solve problems that belongs to physics, yes, it's a goal, because they would be able to solve maybe 5, 10, 15 problems in their, in that particular year of study. So that is okay. ठीक है, तो कुछ चीजें देखिए, aims and goals में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डू बुक कीपिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, परफेक्टली अ गोल. ठीक है, सो एम्स और गोल्स दोनों ही लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन गोल्स थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं. जैसे मैंने एक बार आपको पिछली बार यही एग्जांपल दी थी कि अगर मैं साइंस प्रोसेस स्किल्स मैं वापस साइंस प्रोसेस स्किल की तरफ जा रही हूँ, या जो अभी हमने मैथमेटिक्स में देखा कि हम कहते हैं कि बच्चा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन सीख कर उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेगा. फिर हमने देखा कि ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है मैथमेटिक्स का, ये कोई स्टैटिस्टिकल चीज हो सकती है, ये कोई ज्योमेट्रिकल चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है ना, ये मेजरमेंट हो सकती है, तो वो बाकायदा मेजर कर सकेगा. ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस आ गए इसके अंदर. अब आप स्पेसिफिकली इस टर्म में बच्चे को मेजरमेंट सिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेजर द लेंथ, ब्रेथ और वॉट एवर इट इज. फिर आप स्कूल में जब वो बच्चा क्लास में कर रहा होगा तो आप उसको स्पेसिफिकली सिखा रहे होंगे. सो ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस आइडिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी यस बोल रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक मिड टर्म में क्वेश्चन आने वाला है. फिर मत कहिएगा कि क्लियर नहीं था. मैं सब बिल्कुल क्लियर हो गया. ओके, मिड टर्म का नाम सुन के सबको क्लियरिटी आ गई. ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलें. ये आज मेरा रिवीजन करवाने का मकसद ही ये था, बिकॉज आई नो कि इट्स बिट कॉम्प्लेक्स थिंग और आप लोगों ने अभी तक ये पढ़े नहीं है किसी और सब्जेक्ट एरिया में भी. तो अभी क्लियर ऑन दिस आइडिया? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे ये कहेंगे कि गोल्स पहले होते हैं, एम्स बाद में होते हैं. बट इट इज लाइक I've seen through a number of books, I've seen through a number of research articles, जो सभी ये कहते हैं कि एम्स पहले हैं, गोल्स बाद में है. तो आई फील कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन ऑन दिस, बट स्टिल अगर आपको कोई लिटरेचर मिल जाता है तो, और अगर बहुत ऑथेंटिक है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं. अदरवाइज जितने भी ऑथेंटिक लिटरेचर्स मैंने देखे हैं, सेलर एंड अलेक्जेंडर को मैंने देखा, जो बड़े अच्छे नाम है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, वो सभी ये कहते हैं कि एम्स पहले हैं, फिर गोल्स हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे टेढ़े हैं हमारे ऑथर्स जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स में ये करते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स पहले, ऑब्जेक्टिव एम्स बाद में, सॉरी एम्स एंड गोल्स में ये करते हैं. सो बट देयर इज लाइक अ सब्सटेंशियल एविडेंस कि एम्स पहले हैं, फिर गोल्स हैं. ठीक है, ओके मिस. सो अब इसमें, और मैंने एसएनसी को भी देखा, मैंने करिकुलम्स को भी देखा कि वो इसको कैसे ले रहे हैं. तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द करिकुलम्स आर डूइंग दिस, कि वो पहले एम्स कहते हैं, फिर गोल्स कहते हैं. और लॉजिकली भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एम्स बहुत ब्रॉड चीज है. हम जिंदगी में कोई एम बनाते हैं पहले कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर हम एक गोल बनाते हैं कि 10 साल में मैं प्री मेडिकल्स में, या 12 साल में मैं प्री मेडिकल से पास करूंगा, फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगा, फिर 5 साल में मैं एमबीबीएस करूंगा, फिर मैं हाउस जॉब करूंगा, फिर मैं अगले 5 साल में जो है एफआरसीपीएस करके स्पेशलाइजेशन करूंगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? Miss, तो फिर we can say that goals are type of a milestone setting. Yeah, it's a benchmark setting कि बस ये मेरा एक बड़ा वाला एम है. ठीक है, Yes. लेकिन गोल्स आर लाइक they are small benchmarks that you set, कि हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर मुझे वेट कम करना है, चले मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे वेट कम करना है. दिस इज एन एम, आई वांट टू लूज माय वेट, और आई वांट टू गेन वेट, और आई वांट टू ग्रो माय हेयर लॉन्गर. सो ये सारे हमारे एम्स है. अब इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ कि भाई 2 महीने में या 6 महीने में आई विल एम के भाई हम 5 किलो कम कर लेंगे या बढ़ा लेंगे. ठीक है ना, तो ये एक गोल हो गया. फिर हम सोचेंगे कि अच्छा मुझे टोटली अगर 20 kg बढ़ाना है
तो हर 6 महीने में 5 kg बढ़ाऊंगा तो मेरा 2 साल में जो है वो, तो ये आपकी गोल्स है, ठीक है। Am I clear? Objectives की तरफ चलूं अब? Yes, miss. Okay, so objectives are very specific. They are very short term in nature. We have objectives usually for a lesson. हर लेसन का अपना ऑब्जेक्टिव होगा. जैसे शीरी का केस है, वहां हर दिन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, हर विजिट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा. इसी तरह कुछ केसेस ऐसे होंगे, अगर मैं हेड ऑफ द स्कूल हूं तो शायद मेरे हर वीक के एक ऑब्जेक्टिव हो, मेरा एक टर्म का एक ऑब्जेक्टिव हो, या मेरा एक सेमेस्टर का एक ऑब्जेक्टिव हो कि इस सेमेस्टर में मेरा बच्चा इतना अचीव कर लेगा, लेकिन पूरे कोर्स में पाकिस्तान स्टडीज के वो ये अचीव करेगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो जो पूरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है वो गोल है, जो मिशन है या टारगेट है वो गोल है, और जो सेमेस्टर का है वो ऑब्जेक्टिव है, और फिर वो दिन का जो है वो मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो जब हम दोनों को, हम जब भी कोई लॉन्ग टर्म चीज देखेंगे, सेमेस्टर वाली उसको हम गोल ही कहेंगे, वी विल नॉट कॉल इट एन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो लेसन्स में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप सब बनाते हैं? यस मैम. ठीक है, so Yes, miss. objectives क्या है? Opportunities for students to devise a mean of assessing the context through which students have achieved the objective. Simple as that. आप objective में क्या करते हैं कि आप कोई ऐसा चीज देखते हैं जिसके थ्रू आप देख सके कि जो मैं चाह रहा था वो अचीव हुआ या नहीं. लाइक अगर मैं मेजरमेंट सिखा रहा हूँ तो मेरे बच्चे को मेजरमेंट आई या नहीं, मैं कैसे एवेल्युएट करूंगी? तो मैं ऑब्जेक्टिव अपना ये बनाऊंगी कि बाय द एंड ऑफ द लेसन माय स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेजर द गिवन ऑब्जेक्ट्स, measure the length of the given objects, या breadth of the, या length, breadth and height of the given objects. So मैं बहुत specific चलूंगी कि मैं एक दिन length सिखा रही हूँ तो मेरा objective will be length, दूसरे दिन breadth सिखा रही हूँ objective will be breadth, तीसरे दिन height सिखा रही हूँ तो objective will be, you know, the students will be able to measure the height, और फिर चौथे दिन मैं तीनों एक साथ combine करके सिखा रही हूँ, या फिर मैं cylindrical objects का सिखा रही हूँ, या फिर मैं क्यूबॉइड का सिखा रही हूँ, तो इट विल बी लाइक वेरी स्पेसिफिक. they are called as smart objectives. Smart means specific, measurable. आप उसको कितना मेजर कर सकते हैं? क्या मेरे बच्चा 10 सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स को इस क्लास में मेजर करके मुझे उसकी मेजरमेंट बता देगा, या उसका वॉल्यूम या उसका जो भी एरिया होता है वो बता देगा? सो इट विल बी as specific as that. ठीक है, measurable, attainable, something that you can achieve in 1, 2, 3 periods, या मे बी मैक्सिममली एक मंथ में. बहुत अचीवेबल टारगेट्स होंगे वो. ठीक है, वो ये नहीं होगा कि पूरी जिंदगी में बच्चा जो है वो ये कर लेगा. ठीक है, इट विल बी समथिंग वेरी अचीवेबल. अटेनेबल या अचीवेबल आप कह लें. टाइम बाउंड होगा कि इतने टाइम में बच्चा कर लेगा. ठीक है, और रेलेवेंट होगा आपके सब्जेक्ट से या जो आप पढ़ा रहे हैं उससे. बहुत रेलेवेंसी इज ऑल्सो समथिंग दैट मैटर्स. अब आप पढ़ा रहे हैं जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस और आप करवा रहे हैं कुछ और, तो ये नहीं चलेगा. ठीक है, ऑल राइट, यस नो कुछ बोल दिया करें ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा जो मैसेज है वो पहुंच गया आप लोगों को. यस मैम. ऑल राइट, आप आगे चलें. Yes, ma'am. ओके, चलिए जी, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, देखिए आप यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर डू यू वांट. आप देखें, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल. बिहेवियर ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज कॉल्ड डोमेन. अब हम ऑब्जेक्टिव्स 3 डोमेन्स में बनाते हैं. ठीक है, think of them as 3 flavors of ice cream. Simple as that. इन्होंने आपको बहुत अच्छा इसको एनालॉजिकली डिस्क्राइब किया कि आपके 3 फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के जो आपको बच्चों को खिलाने. ठीक है, अब देखते हैं आगे वो कौन से फ्लेवर्स हैं. ठीक है, अब देखिए, नंबर 1 इज डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव एबिलिटीज, और ज्यादातर हमारे 80% ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो कॉग्निटिव होते हैं. ठीक है, कि हम जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नाम सुना है आप सबने? Yes, miss. ठीक है, तो ये ब्लूम्स से हम डिराइव करते हैं, इसके बारे में अभी आगे बात करें. एंड दे आर बेसिकली द हेड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है,
They are most familiar to both instructor, authors and learners. They are known as head objectives. ये आपके cognitive objectives होते हैं जो आपके cognitive या intellectual abilities को deal कर रहे होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसमें आते हैं affective domain, जिसमें हम appreciation की, feelings की, emotions की, fears की, beliefs की, values की बात करते हैं. And they are known as heart objectives. ठीक है, हार्ट से आप याद रखें इमोशंस, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिलीव्स, अप्रिसिएशन, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज हैंड ऑब्जेक्टिव. हैंड का मतलब क्या है? साइकोमोटर. साइकोमोटर क्या होता है? कि जिसमें आपकी मोटर स्किल्स यूज हो रही हो, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिकल स्किल्स यूज हो रही हो. द इजीएस्ट ऑब्जेक्टिव टू इज टू राइट as behavior is easily observed and monitored. ये सबसे easy क्यों है? क्योंकि आप इसमें बच्चे का objective basically आप उनकी skills को basically देख सकते हैं. जैसे आप कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर, मेरा बच्चा वर्नियर कैलिपर को यूज करके एक सिलेंडर का लेंथ मालूम करना सीख लेगा. तो ये क्या है? समथिंग वेरी फिजिकल. आप देख सकते हैं कि उसको वर्नियर कैलिपर यूज करना आ रहा है, साइकोमोटर है, ठीक है. उसको पेंसिल पकड़ना आ रहा है, साइकोमोटर है. उसको कलर लाइक यू नो क्या वो प्ले डो से कोई ऑब्जेक्ट्स बना सक रहा है, साइकोमोटर है, ठीक है. सो दे आर लाइक हैंड कोर्सेज विल कंटेन उसको कोई स्टिच बनाना आ रहा है अगर आप होम साइंस करवा रहे हैं. फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जी, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं. जी जी जी. तो ये सारे साइकोमोटर डोमेन में आ जाते हैं. अब देखिए हर लेवल पे ये साइकोमोटर डोमेन्स भी बनते हैं, लेकिन ऑब्वियसली विद एज दे विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स और लेस विजिबल, ठीक है ना. जो छोटे बच्चे होते हैं जो आपके प्री प्राइमरी लेवल के, वहां तो आपको बड़े इजीली ये नजर आ जाती है डेवलप होती हुई, लेकिन बड़े बच्चों में फिर थोड़ा थोड़ा इसकी विजिबिलिटी कम होती जाती है और उस पर हमारा फोकस भी कम होता जाता है और कॉग्निटिव पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है. सो ऑल दीज थ्री डोमेन्स आर हायरार्किकल. हम लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ जाते हैं. जैसे हम अगर लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो पहले हम अल्फाबेट पढ़ाते हैं, फिर वर्ड पढ़ाते हैं, 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ. इसी तरह जब हम इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो हम पहले बताते हैं कि कौन से मूड्स हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं, ठीक है. आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हैप्पी होना सिखाएंगे या आप उनको कुछ चीजों को, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सिखाएंगे, लेकिन आप फिलोसफिकल चीजें नहीं सिखाएंगे उनको प्री प्राइमरी में, ठीक है. आप फिलोसफिकल चीजें कब सिखाएंगे? जब वो मैट्रिक में आ जाएंगे. सो ये हायरार्कियल है, ठीक है. अगेन जी जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? मैम इट्स अ प्रोग्रेशन. या इट्स अ प्रोग्रेशन. कहाँ पढ़ा था? ठीक है. ओके. और किसी भी कोई भी आप तीनों डोमेन्स पे चले जाए, तीनों में आपको प्रोग्रेशन नजर आएगी, ठीक है. चलें अब आगे चलते हैं. Now there are 3 domains. No, they are not interrelated. जरूरी नहीं है कि हम तीनों डोमेन्स के ऑब्जेक्टिव्स बनाएं हर सब्जेक्ट में हर वक्त. हम ज्यादातर हमारा फोकस स्कूल में कॉग्निटिव पे ही रहता है, ठीक है. और जो ब्लूम्स के 6 लेवल्स हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट. अब नॉर्मली आप देखेंगे कि आप जितने भी करिकुलम्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि मैट्रिक तक हम शुरू के 3 लेवल्स पे ही रहते हैं, which is remember, understand and apply. बहुत कम हम create या evaluate का level कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये तीनों levels पे ही ज्यादातर रहते हैं, ठीक है. Again we are running out of time, so 10 minutes के बाद हम वापस ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है. Okay. I hope this is recording. Yes, miss. Yes, miss. All right. तो अब इसी तरह इफेक्टिव के भी 4 डोमेन्स, 4-5 लेवल्स हैं. सबसे पहले तो रिसीविंग, कि आप क्या करते हैं कि आप किसी चीज को देखते हैं, आपने फ्लावर को देखा और आपने रिसीव किया दैट दिस इज ब्यूटीफुल. फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप उसको लाइक करते हैं की कोशिश करते हैं. द चाइल्ड सेज कि मेरा ये फेवरेट कलर है. देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग दोस, ठीक है. तो आप क्या कहते हैं कि भाई फ्लावर्स को प्लक नहीं करना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इट्स लाइक इफेक्टिव इज समथिंग कि आप किसी चीज की ब्यूटी को, किसी चीज की वैल्यू को अप्रिशिएट करें,
या फिर आपके बिलीव्स को जो डेवलप होते हैं, जो कल्चरल वैल्यूज या सोशल बिलीव्स या नॉर्म्स के बारे में, ये सब अफेक्टिव डोमेन में चले जाते हैं। या फिर आप साइकोमोटर में इंटिमेशन, इमिटेशन, बच्चा आपको देख के वही चीज रिपीट करे। मैनिपुलेशन इज लाइक फिर वो खुद से कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन इज अ वेरी हायर लेवल इसमें भी, क्योंकि ये एथलीट्स वगैरह में आपको नजर आएगा कि वो खुद नेचुरली खुद से फिर दे आर लाइक डूइंग इट। तो ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप देखेंगे स्पोर्ट्स वगैरह में आपको ये चीजें आर्टिकुलेशन और प्रिसीशन नजर आएगा। बट एट लोअर लेवल इट्स मोर लाइक इमिटेशन एंड मैनिपुलेशन। ठीक है, कि वो आपको देखकर फिर खुद वो चीज प्रोड्यूस करे। आपने जैसे पेंसिल पकड़ी, बच्चे ने वैसे पेंसिल पकड़ ली। ओके? Yes, miss. Yes, ma'am. So we'll take a 10 minutes break again and we'll come back with certain objectives from our कोई एक अपनी टेक्स्ट बुक में से चैप्टर उठा ले और एक टॉपिक उठा लें। ठीक है, उसमें से एक कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव और एक साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि आपके हिसाब से ये अफेक्टिव है, ये कॉग्निटिव है, ये साइकोमोटर है, वो उठा लें और वो 3 ऑब्जेक्टिव्स लें। अभी टाइप नहीं करिएगा, जब रीस्टार्ट हो मीटिंग तब टाइप करिएगा एंड देन विल कम बैक एंड विल डिस्कस। फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी, ठीक है, जो मैंने क्रिएट किए। कैसे करेंगे जी? एसएसटी में ही कैसे करेंगे? कोई भी टॉपिक उठा ले किसी बुक में से। ओके ओके। और उसका एक कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कॉग्निटिव इज वेरी क्लियर कि हम जो रोज क्लास में बना रहे थे वो कॉग्निटिव ही होते हैं। ठीक है ना? यस मिस। फिर आप एक अफेक्टिव बनाएं कि उसमें कुछ वैल्यू, कुछ बिलीफ या कोई चीज भी डेवलप करने की बात करें, और एक साइकोमोटर बनाएं कि वो जैसे एसएसटी में मैप प्लॉटिंग इज अ साइकोमोटर स्किल। ठीक है, बट उसको लेबल करना इज कॉग्निटिव। हाँ, इसको लेबल करना इज कॉग्निटिव। Okay, okay. Identifying the direction is cognitive, or moving in that direction is psychomotor. ठीक है? Okay, okay, okay. चले, तो कुछ भी आपको जो समझ में आ रहा है वो बनाएं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर हो ही जाएगा। But I want you to have your own examples so that आप उसको फिर खुद ही evaluate कर सके। तो सबको क्लियर है ये? Yes, miss. Gentlemen, are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले, all right. So we'll just take 10 minutes और फिर हम नई मीटिंग में वापस ज्वाइन करेंगे। ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am.
Eagle, pigeon, बीक लग रही है मुझे तो eagle की. Hello, G. You want to ask anything? No, ma'am.